Last time we spoke about caregiving stress, the invisible weight so many people carry while looking after everyone around them. And if we are being honest, in most Indian family, that person is our mother. She carries everyone else's health anxiety without ever talking about her own. So today we are talking about care, illness, and the lesson our body is trying to teach us. In Indian families, there is often one person. In our cases, from what we have had the conversation around, a lot of times our mothers are the person who holds everyone health anxiety inside themselves. They are worrying constantly about others even more than what they are worrying about themselves. So how can we actually stop that, and what is our responsibility in a situation like that? So, definitely, the question says itself that our mothers do so much. There are homemakers, there are nutritionists, they take care of our BP while not checking their own. They're doing anything and everything to keep the family in good health and in good space. One thing which I feel that I have been doing, and a lot of other people that I know have been doing, regular blood tests for our moms, regular gynec visit. If the moms are above 50, of course, their bone health needs to be in place. So while of course they are making meals for us, they're taking care of the entire household, that everything runs smoothly, we need to make sure that her nutrition is being fulfilled. She is taking the correct supplements. I'm sure my mother did not do a master's or a graduation like I did. I studied pharmacy. So I have the knowledge. I want to use that for my parents. So, both for my father and mother, I make sure that they know they are taking the right supplements. They are getting themselves tested. They get a full body checkup once in 6 months. Sugar levels check kare. If it's not in levels, then they take a proper diet and other things. ओवर दीज ईयर्स मैंने ये नोटिस करा है जो मेरी मदर है उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स है. सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वी कैन डू, दैट वी नोटिस कि वो क्या क्या करती हैं. फॉर एन एग्जाम्पल, मेरी मदर अगर खाना नहीं खाती हैं तो शी विल गेट डिजी. सो मैं देखता हूँ अगर हम कहीं बाहर भी हैं तो शी ईट्स. अगर मैं भी कहीं बाहर हूँ, या आई मेक श्योर दैट शी ईट्स. अगर वो घर पे अकेली भी हैं तो आई मेक श्योर दैट शी ईट्स. प्रॉपर मेडिसिन्स ले. मैं जब भी फ़ोन करता हूँ उनको रात में तो आई ऑलवेज आस्क कि आज मेडिसिन्स ली या नहीं ली. सो दैट्स द इम्पॉर्टेंट थिंग. Harsh? आई थिंक फॉर मी मैंने ज़्यादा क्लोजली अपनी नानी को देखा है, तो आई विल टॉक अबाउट हर. कुछ ऐसे पॉइंट्स होते थे व्हेन शी नीड्स मेडिकल केयर, उनको डॉक्टर के जाना है, बट द फैक्ट कि अगर वो एक दिन डॉक्टर के जाएंगी तो घर के काम रुक जाएंगे. वो इस गिल्ट में खुद को इतना सफ़र करा रही हैं कि वो डॉक्टर के ही नहीं जा रही. एंड इतना केयर गिविंग नेचर नहीं होना चाहिए ऑनेस्टली. आप अपनी बॉडी को सफ़र करा रहे हो एक दिन के घर के काम के लिए. एंड देन प्लस इन माई हाउस होल्ड इवन इफ शी इज़ टेलिंग कि मेरे को जॉइंट में पेन है तो मुझे डॉक्टर के जाना है और सब, तो दे आर लाइक कि कौन लेके जाएगा. दैट woman इज लिटरली सैक्रिफाइसिंग हर सेल्फ फॉर यू गाइज, एंड तुम लोग ले जाने में भी आलस करो. सो वॉट आई डू इज वेन एवर आई एम गोइंग बैक होम, मैं जितने भी उनके डॉक्टर्स के साथ उन्हें जाना है, दिन में 3 हो 4 हो, जिस भी डॉक्टर के जाना होता है, मैं हमेशा मेक श्योर करती हूँ कि मैं अपनी नानी को उनके सारे कंसल्टेशंस के पास लेके जाऊँ. उनकी प्रॉपर मेडिकेशन ला के उन्हें कम से कम 2-3 हफ्ते की रख दूँ कि मैं जब नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो मैं दूँगी. एंड डेली उनका मुझे कॉल आता है. मेरा तो नहीं आता, उनको आता ही है. तो मैं उस टाइम पूछती हूँ कि आपने दवाई खाई, आपको डॉक्टर ने वो दी थी. मेरे पास लिटरली एक पूरा ऐसे नोट पैड पे मैंने लिखा हुआ है कि ये दवाई 3 दिन का कोर्स, ये दवाई है वो. और मैं पूछती रहती हूँ क्योंकि मुझे पता है अगर मैं नहीं पूछूंगी तो नहीं खाएंगी. एंड मेरी नानी नाना अकेले रहते हैं, मतलब कोई वो नहीं थे उनके सन. उनकी 2 डॉटर्स हैं और उनकी खुद की लाइफ है, तो बेसिकली अकेले रह रहे हैं उस घर में. एंड मेरे नाना इज थोड़े से चाइल्डिश, वो खुद का ख्याल नहीं रख पाते, किसी और का क्या रखेंगे. तो इस बीच में मुझे ऐसा लगता है कि नानी खुद को भूल चुकी है. She's busy taking care. शी इज बिजी टेकिंग केयर ऑफ हिम. एंड इसलिए मतलब ये हमें ज़रूर याद रखना चाहिए और उन्हें याद रखना चाहिए, बताना चाहिए कि आपको अपना ख्याल रखना है. ये आपकी खुद की बॉडी है, आपको गो थ्रू करवाएगी पूरी लाइफ में, आगे यही साथ देगी, कुछ और नहीं देगा. सो खुद को थोड़ा प्रायोरिटाइज करना हमारे ना मम्मियों को सीखना चाहिए. बहुत ज़रूरी है. हर्षिता?
I think this question right now is very ironical because recently we've celebrated Mother's Day, and the fact that our mothers are always available speaks a ton actually. And I just want to be available for her as much as she is there for everybody. So just like being available, even I am living very far from her and I've always lived away, so I take care of everything on a call. And whenever I go home, I always make a diet chart of sorts for her, curtailing to her daily needs, requirements, height, weight, everything. So she has like a planned diet chart, and I have forced my mother to join a yoga class. So she goes, practices yoga daily. And just small things. Our mothers don't expect anything actually from us. It's just not even like a good morning text like your boss would expect you to send. Our mothers don't expect anything, not even as a matter of fact respect. She's just there for us even if we have nothing to give. And just being present for her, taking her calls on time, that matters a lot to her. And when it comes to talking about health and our mothers, they never take care of themselves. It's always us who is whining and pushing her to take this medicine, go to this doctor. So I'll always make sure she gets a full body checkup done twice a year. And even all of her children live away from her. I don't go there myself, but I always ask one of my brothers to just take her to the doctor. She like to get all the checkups done, and my mother is like, touchwood, very independent and everything. She can go on a hospital visit herself, but I always ask somebody to accompany her because it's never a nice feeling to go to a doctor alone. You don't know what you're going to be diagnosed with or not. बेसिकली ना पेरेंट्स एक एज के बाद ना वापस रिवर्स एजिंग होती मेंटली, राइट? दे बिकम बेबीज. अगर आप वो भी नहीं करवा सकते जो सबने बोला, छोटी छोटी बात, बस ये पूछ लो कि दिन कैसा गया आपका, राइट? वो तो आपको दिख ही रहा है ना. मे बी दे वांट समबडी टू टॉक टू बिकॉज दे आर लोनली एट द सेम टाइम. A lot of time that is the case. फिर उन्होंने अपना पीरियड आपको दिया जब आप बेबीज थे. नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी द पेरेंट फॉर देम. So I think you have to just become a parent who understands and they feel safe around it, so that जैसे हम झूठ बोल के जाते हैं ना कि आज यहाँ जा रहे हैं बट कहीं और चले जाते थे, they should also feel safe and also understand that you are responsible and you can take care of yourself. वरना क्या होता है, लोग पेरेंट्स ना, मॉम स्पेशली, अगर उनको लगता है ना बच्चा अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हो पाए, मैं अपना क्यों बर्डन डालूँ उस पर. तो यू शुड बी एबल टू शोकेस योरसेल्फ दैट मॉम, आई एम अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल इनफ, आप मुझे बता सकते हो. Then that's when she will like feel safe to tell you कि what is she suffering from. Okay, so to end this session, I would like to ask a very simple question. What has illness taught you, yours or someone that you have loved? What has that taught you? Why it actually matters? Has it changed on how you live, what you prioritize, and how you treat your own body? What have you learned? So, I have not been in a very severe medical situation as of that. But in the past decade, I have become very empathetic. I wasn't that earlier. And my job also is such, especially different departments, and palliative is something, dealing with patients. I've become very empathetic. So one thing which I've realized is, after seeing so many ICUs and patients who are almost at their end of life, that you need to enjoy now. Very. You never know if there's a tomorrow. It's good to plan, it's good to have a future plan, but you never know what's gonna happen tomorrow. And it's very important to take care of your health, your physical health, your mental health, because one small thing, one diagnosis, one ICU can change your life. Action. So according to me, the health is not something like, oh, I can deal it with later. Yes. It is not something that we can postpone. We have to, look for this today. And also, prevention is better than cure, as we all know. Because क्योंकि early stage में ही अगर हमें पता चल जाएगा तो it would be easier and notice small changes in our body. So, at the end of the day, we should start asking ourselves that
if we are okay or not. First of all, when someone is telling you that they need help, I think वो सबसे बेसिक होता है. You should provide them with that help. भले ही वो डॉक्टर कंसल्टेशन हो, उनकी मेडिकेशंस हैं, जो भी हो, उसको आई थिंक सबसे ऊपर प्रायोरिटी पे रखना चाहिए. एंड सेकेंड थिंग आप ये कर सकते हो कि आप उस लेवल तक मत पहुँचो. कोई प्रिकॉशंस कि आपको अगर थोड़े से भी सिम्टम्स दिख रहे हैं, आप डॉक्टर के पास गए, वो कह रहे हैं कि हाँ अभी इतना नहीं है, ठीक है, अभी एक स्टेज है, बट आप इसे भी कंट्रोल कर सकते हो, तो उसे कंट्रोल कर लो. उसे उस लेवल तक मत जाने दो उस प्रॉब्लम को कि जहाँ पे आपको प्रॉपर ऐसे केयर चाहिए और समथिंग, जो मोस्टली हमारे पेरेंट्स और हम लोग करते हैं कि हम इग्नोर करते हैं तब तक जब तक वो सीरियस नहीं हो जाता है. My learning would be never take your health for granted, because nothing, the whole ecosystem of your being is all biological, and it all has a meaning to it. It all has a algorithm to it that you have to respect and abide by. And always be there for your parents, your mothers especially, because throughout their lives they have been a caregiver. So now it's our time to take care of them. Even if they are taking care of you, asking if you have eaten or not, you can also ask the same question. And I would like to end this with a quote: at the end we all become stories. It has taught me, बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं. That's what it has taught me. Basically, यार बॉडी तो आज नहीं तो कल ख़त्म हो जाएगी. आप ख़त्म हो जाओगे, कोई याद नहीं रखेगा आपको. 10 साल, 20 साल, 100 साल, कितना याद रख लें, कितना भी कुछ बड़ा काम कर लो. बट मैं ये नहीं कह रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि आप एकदम बॉन्कर्स हो जाओ कि अच्छा कुछ भी खा रहे हैं, कुछ आपका निकल भी है, उसके बाद भी आप पिए जा रहे हो. नहीं 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 भाई, you have to cater to your body, because this is like your living space. If this is not there, आप अपने घर क्लीन रखते हो ना, try to keep it clean and healthy. Simple as that. But at the same time, don't stress around small things. Small चीज़ें आती रहेंगी. बट अगर उस पर फोकस करना चालू आप जीना भूल जाओगे, सिर्फ सोचते रह जाओगे. That's what I feel. One of the biggest lessons illness teaches us is that health isn't something we can keep postponing. Not for ourselves and not for the people we love. How we live, how we rest, how we connect, and how we show up for each other, everything matters. Hope you found these stories relatable, and if you have any questions, drop them in the comments. I'll see you in the next one.